हाय गाइस, सो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पेंटिंग टुडे और मैंने डिसाइड किया था कि इस पेंटिंग को मैं मोनोटोन में करूँगी और मैं ग्रीन मोनोटोन लाइक ग्रीन टोन यूज़ करना चाहती थी इसके लिए। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज़ कि मेरे पास जितने भी ग्रीन कलर्स हैं और एक येलो निकाले हैं, सो आई कैन डिसाइड ऑन कि मैं कौन सा टोन जो है उसको यूज़ करूँगी। So right now I'm going to try and make, it's called phthalo green. Okay, पहले medium निकल आया सारा, which is really annoying actually. So yeah, it's the tone I'm using. और मैंने इतना ज़्यादा पोर सिर्फ इसीलिए किया है बिकॉज इसका मीडियम ही सारा निकला है बाहर। अच्छा, मैं पैलेट नाइफ लूँगी पेंट मिक्सिंग के लिए, थोड़ा स्मूथ आउट करके जिस तरह। अभी आई फील लाइक कि ये थोड़ा सा डार्क है, मुझे बेसिकली मिड टोन चाहिए राइट नाउ। सो आई फील लाइक इन दिस आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ येलो। So I'm using is Indian yellow. I think I'll mix this on itself, but I want कि थोड़ा सा और yellowish हो। अच्छा, अब मैंने ये एक कलर लाइक डिसाइड कर दिया है जो मेरी मिड टोन होगी, ठीक है। तो इसको अब इसमें हम जो हैं इसके ये ह्यू है बेसिकली, अब हम इसके टिंट्स निकालेंगे और इसके शैडोज़ निकालेंगे। सो टिंट्स आर द लाइटर शेड्स जो हम इसको वाइट के साथ मिला के फिर बनाएंगे, और जो शैडोज़ हैं उसमें हम ब्लैक यूज़ करेंगे। Although I still feel like it's a little darker, I'll mix a little bit more of color in this. A bit of this. This is emerald green. ये भी वैसे मुझे थोड़ा सा ओपेक फील हो रहा है, बट अभी हम करके देखते हैं कैसा निकल रहा है। अच्छी तरह मिक्स करना होगा। I think this is good. I like it. So now apply this over here. अब ये सेंटर हो गया है जो हमारी टोन है उसका। This is the mid tone. We'll start with the lighter tones, so I will add some white here और slowly थोड़ा सा सिर्फ मैं इसको मिक्स करूँगी इसके साथ। आई थिंक मैं चाह रही हूँ कि 4 से 5 एटलीस्ट हों दोनों साइड्स पे। इसमें आई फील लाइक थोड़ा सा और डालती हूँ, लाइक इट आई वांट कि डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो। I think we can have one more.
Now I'm just going to wash my brush before I go into the darker tones. So you do it the same way that you make the light tones, बस ये difference होता है कि black आप बहुत कम use करना होता है, बहुत आराम से you have to add it in. ब्लैक का बेसिकली होता है कि बहुत आराम से यू हैव टू ऐड इट इन. सो बिल्कुल हल्का से लेके यू कैन स्टार्ट. ओके देन. And just the same way that you did with the okay, so I think for the darker tones वो थोड़ी कम आई हैं उसमें because ये color already थोड़ा dark है, but we can add another dark tone here also. अच्छा, अब monotone painting में ये भी है कि like I just don't want to go with one tone exactly. like मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा येलो हो इसके हाईलाइट में. So I'll just be using a little bit of yellow now and mixing it in with the ये वाला. I just want to see कि वो लगेंगे कैसे इसके साथ. थोड़े yellowish tones. Whoa. I mean, I might not use these, but I just wanted to try them out. जो हमारी मेन टोन है उसको मैं फिर से हाईलाइट करना चाहती हूँ. This tone just to remember, I'm going to make this कि जब मैं अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे याद रहे कि मैंने कौन से कलर्स यूज़ किए थे उस पेंट को बनाने के लिए. I don't even think मैंने सेंटर वाली टोन यूज़ नहीं की थी. मैंने गलती से लगा दिया है, इसको हम हटा देते हैं. I've already forgotten. Anyway. This is my first palette mixing video and I apologize कि मेरी जो line है वो बहुत टेढ़ी बनी है which is quite unsatisfying actually, but I would like to make more of these videos in the future and obviously organize and plan for and learn from all the small mistakes I make on the way.